Good afternoon, my dear kids. This is Chetan sir. So today I'm going to explain you uh, physics for technology, right? Physics for technology. So a small repetition of yesterday I'm going to make, right? तो छोटा सा repetition करना चाहता हूँ. So this is the point we are going to make. So it will be containing number of sub points inside it. Physics for technology means the technology to develop technology we need physics, right? तो physics में technology का meaning क्या है? First of all, technology, what it is basically, it is an idea of innovations and creativity. It is an idea of innovations and creativity which is applied to achieve necessary objectives. Is that clear, my dear kids? So technology क्या है? It is an idea of innovations and creativity which is applied to achieve necessary objectives. So whatever we used to keep objectives, हमारे जो objectives रहते हैं ना उसको achievement करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? या we are using one particular idea जिससे हम innovations करते हैं and those ideas will be very creative. ठीक है? तो वो objectives को achieve करने के लिए वो creative ideas हो या innovations हो, we are going to use that idea to apply that objectives को preserve और achieve करने के लिए. ठीक है? चलो, technology we got, and physics for technology, as I said that uh, there is an object, which is on the earth. Fine, कोई object है and it is on the earth, है ना? Say for example this is a rocket, है ना? ये क्या ही है? This is rocket placed on the earth. So the object is at rest. First of all, object is at rest. I'm taking an example of rocket here, right? तो मैं किसका example ले रहा हूं? I'm taking an example of rocket. Now let me take an example of what? Example of pen. So you're taking an example of pen which is kept it on the table, है ना? या bench. So if you have kept this pen for long time, means even after passing of uh, 2 minutes, 5 minutes or an hour, okay, the position of pen which is at rest is not changing by itself. क्या पेन अपने आप उठ के चल रहा है? Is pen is moving by on its own? No, my dear kids. Why? Sir, it is unable to do that. Unable. Sir, inability है sir pen का, है ना? So the inability of that body to change its position of rest is called as inertia. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? That is called as, the state is called as inertia. कि पेन अगर रेस्ट पे पड़ा है तो वो रेस्ट पे ही पड़ के रहेगा, उसको कोई जब तक ना हटाए, जब तक उसको कोई ना उठाए या जब तक वहां से कोई उसको ना धकेले, it will be at rest. So this inability is called as what? Yeah, this inability is called as inertia. इसको हम inertia बोलते हैं. Fine. It is the state of rest. Not only state of rest, say for example, कोई
रॉकेट है, ठीक है, कोई रॉकेट नहीं यार, एक काम करते हैं, देयर इज अ व्हीकल, आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हीकल, चलो व्हीकल ले लिया मैंने, फाइन, सो देयर इज एन व्हीकल, नाउ दिस व्हीकल इज मूविंग, फाइन, ये क्या कर रहा है, व्हीकल मूव कर रहा है, हाउ इट इज मूविंग, ओवर द रोड, है ना, तो कैसे मूव कर रहा है ये, ओवर द रोड। Now let me tell you one thing my dear kids, if this vehicle is moving in the further front direction, आगे बढ़ रहा है, okay, and it is moving with a uniform speed means, say for example this vehicle is moving with 40 kilometer per hour, क्या सर इतना स्लो, so for every hour the speed of the vehicle is 40 kilometer, it means what, the uniformity is maintained throughout the span of time, है ना, so this type of motion where the uniformity is maintained, where no acceleration is taking place, acceleration यहाँ पे क्या हो रहा है, acceleration is zero, why, because speed is not increasing, velocity is not increasing, so we can say that the vehicle is at uniform speed, vehicle uniform speed पे है, 40 किलोमीटर पर आवर पे है, सर आवर में नहीं मिनट में लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज, से फॉर एग्जांपल 20 minutes 20 meter per minute, the vehicle is traveling with 20 meter per minute, means say for example this vehicle will be going to travel for next 10 minutes, चलो 10 मिनट तक दौड़ेगा, so how much it is traveling, 20 meter per minute, it means there is a maintaining of speed, uniform maintenance throughout the path, and this type of motion is called as what, नॉन एक्सेलरेटिव मोशन, मतलब यहाँ पे चेंज इन स्पीड नहीं हो रहा है, नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेनिंग थ्रू आउट द पाथ, सर can we call this as inertia sir, yes my dear kids, if the vehicle is moving in a uniform motion and unless until we are applying the force, unless until we are increasing the acceleration by applying force through the clutches, है ना, जो भी है उससे हम फोर्स अप्लाई करके एक्सेलरेशन जब तक नहीं बढ़ाते तब तक यूनिफॉर्म मोशन में ही चलेगा, इफ नो फ्रिक्शन इज गिवन, if no friction is given, if no brakes is applied, this vehicle will be going to move with uniform speed, and that maintenance of uniform speed is called as the state of inertia of uniform motion, है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ये स्टेट है वो कंटिन्यू रहेगा, not only with the rest but also with the uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन टर्म याद रखो, यूनिफॉर्म मोशन, जहां पे आपका मोशन का क्या spans changes नहीं होंगे, there will be maintenance of the uniformity in the motion. Now there is a cricketer, say for example, okay, so this cricketer is putting ball towards the batsman, यहाँ पे बंदा बैट लेके खड़ा है, ठीक है, चलो, okay, he is holding this bat, now this person will throw a ball, the bowler will going to throw the ball यहाँ पे ऐसे, so बॉल ऐसे जाने के बजाय क्या होगा, यहां से जाके बीच में से टर्न होके बोलेगा नहीं नहीं मैं चाय पी के आता हूं, आई एम गोइंग टू टी स्टॉल, इज दैट, क्या ऐसे हो सकता है, द बॉल विच इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इज इट चेंजेस इट्स ओन पाथ बाय ऑन इट्स ओन, नो, नो, so that inability of that ball which does not change its direction, क्या direction, no change in direction, this type of inability is also called as what, inertia of direction, क्या बोलते हैं इसको हम बच्चों, inertia of direction, it doesn't matter here of uniform motion or non uniform motion my dear kid, यहाँ पे we are only specifying the direction, ठीक है, uniform motion अलग है, rest is different and direction is different, so we are taking three different entities,
एक आपका डायरेक्शन है, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन है, तीसरा रेस्ट है, ठीक है ना। तीनों की तीनों डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो तीनों डिफरेंट स्टेट्स में एक तो यूनिफॉर्म मोशन अपने आप चेंज नहीं होता, and एक तो the state of position of rest, it will not change on its own, and another one, the change in direction will not takes place on its own of that ball, ठीक है ना, where the cricket is going on, or else the footballer is kicking a football, एक बंदे ने फुटबॉल को दे मारा, ठीक है, दे मारा, किधर मारा, ऐसे, ये फुटबॉल है आपका, so he is hitting that, okay. So say for example, now the ball is moving in this direction, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इन द मिडिल आई थिंक उसको दिमाग में आता है नहीं नहीं मैं इस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे वापस पीछे जाऊंगा, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. So this inability of the ball which is moving in a particular direction which will not change its direction on its own, so this type of inability is called as inertia, inertia of direction, ठीक है. So these are all what, ये सारे क्या है सर, you are explaining inertia sir, right? Yes my dear kid, this is what I am telling you with the rocket. Rocket जो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं, say for example this is the specification of the direction of the rocket which is programmed into the rocket. रॉकेट के सुपर कंप्यूटर में वो डायरेक्शन को क्या किया गया होता है, प्रोग्राम किया होता है. तो जब तक इसके डायरेक्शन में हम चेंजेस नहीं करते हैं तब तक वो अपने डायरेक्शन पे सीधा चलेगा. And when you are trying to change the direction of the rocket, definitely that will be going to change. Is that clear my dear kids? So this is Newton's first law, क्या, the inability of the body, ठीक है. So now Newton's second law, Newton's second law क्या है, unless until you are going to apply force over the rocket, तो रॉकेट पे जब तक फोर्स का एप्लीकेशन नहीं होगा, सर रॉकेट पे फोर्स का एप्लीकेशन कैसे होगा, सिंपली बाय पुटिंग द थ्रस्ट फ्रॉम द नोजल्स ऑफ रॉकेट इंजन. रॉकेट का जो रॉकेट का जो निचला हिस्सा रहता है ना, वहां पे उसके नाक रहते हैं जिसको नोजल्स कहते हैं. सो फ्रॉम हियर थ्रस्ट इज प्रोवाइडेड टुवर्ड्स वेयर, टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस. तो इससे क्या मिलता है, वापस पुश मिलता है. पुश टू व्हाट, पुश टू द रॉकेट. सो यहाँ पे इस हिस्से में होता है. So it will be carrying nozzles through which after burning fuel it will push the thrust downwards. तो thrust, ये वाले हिस्से को हम thrust कहते हैं, okay. And due to this thrust the push is given to this mark, I am going to call it as push. So for every action there is equal and opposite reaction. Opposite reaction क्या है, push है, action क्या है, thrust है, yeah. Due to this force we are getting what, momentum. तो आपका फोर्स किधर लग रहा है, पुश इज नथिंग बट फोर्स, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही मोमेंटम लगेगा ना. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देयर विल बी अ डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो मोमेंटम अगर हो रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन जरूर होगा, है ना. सो ये एक्सेलरेशन जो होगा ना, इट विल बी पॉजिटिव, it will be positive and against the gravity. तो against the gravity, so gravity कैसे act करेगा इस पे, रॉकेट पे, here downwards with the blue arrow mark I am showing. So acceleration due to gravity is acting downwards, that is 10 meter per second square. And the force you are whatever providing to this rocket to overcome the gravity factor. तो फोर्स से जो एक्सेलरेशन मिल रहा है जिसमें वेलोसिटी का मेंटेनेंस कितना होगा, फॉर एवरी मतलब यहाँ पे कैसे एक्सेलरेट करेंगे, टू एक्सीड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, फॉर एवरी सेकेंड द रॉकेट शुड प्रोवाइडेड विद द स्पीड ऑफ 11.2 किलोमीटर, है ना. मतलब एक सेकंड में कितना डिस्टेंस को कवर करना है रॉकेट को, 11.2 किलोमीटर. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड नहीं बोल रहा हूं, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बोल रहा हूं. When I'm saying escape speed 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड with the direction, उसको हम escape velocity बोलते हैं, because we are going to decide the path of the rocket, ठीक है.
So with the programming, by using the technology, we are putting the direction inside the rocket, and just by moving the nozzles of the rocket, we are simply changing the direction. The allotted path of the rocket can be changed by changing the direction of nozzles, क्योंकि nozzles का direction change करने से क्या होता है, thrust उसी डायरेक्शन में होता है. समझो ऐसे किया है मैंने तो रॉकेट ऐसे उड़ेगा, अगर ऐसे किया है तो रॉकेट ऐसे उड़ेगा. is that is that clear, my dear kids? So by producing thrust, we are getting the push. So this is what application of Newton's third law. जितना thrust नीचे दिया उतना ही push ऊपर मिला, Newton's third law. और जैसे ही force मिला वैसे ही accelerate हुआ, Newton's second law. तो पहले कौन से स्टेट में था? It was in the state of rest. Okay, so this is called as what? Applying all of the three laws. ये वाला Newton's third law. So three of the laws is applied over the rocket by using the idea in terms of what? In terms of innovations and creativity. रॉकेट बनाया, फिर नॉजल्स बनाया, उसके अंदर फ्यूल डाला, फ्यूल डालने के बाद उससे थ्रस्ट निकाला, फिर रॉकेट के अंदर प्रोग्रामिंग बनाया, सी प्रोग्रामिंग कह लो, जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग्स बाय यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स. उसका एक दिमाग हो जाता है, मतलब रॉकेट का एक दिमाग रहता है. सो दैट विल बी गोइंग टू कैलकुलेट द पाथ, अलॉटेड पाथ. तो उस हिसाब से वो आगे बढ़ते जाता है. सो वी आर यूजिंग फिजिक्स फॉर टेक्नोलॉजी to enhance our day-to-day life. Sir, rocket का use क्या है? Because we want to send, as I said yesterday, satellite into the space to build the communication between sender and receiver. तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, how it is becoming easy just because of communication between me and you peoples. ठीक है? So मेरा वाला जो मैं सिग्नल सेंड कर रहा हूँ, I am sending it through the optical fibers. तो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जो एंटेना रहता है, थ्रू दैट एंटेना इट इज गोइंग टू द सैटेलाइट. ठीक है? सैटेलाइट से फिर आप जो रिसीव कर रहे हो, इट इज एट योर मोबाइल और एल्स एट एनी कंप्यूटिंग डिवाइस. ठीक है? बट वी आर यूजिंग what kind of device? सारे सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए, बिकॉज माई साउंड इज गोइंग टू यू, it is getting converted into electrical signal, and when it is passing through the optical fiber, again it is coming back to you via satellite at your device. तो इलेक्ट्रिक सिग्नल से फिर से साउंड सिग्नल, वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, and that type of conversions can be done by particular device, and that device is called as transducer. देखो ये सारे क्या हैं? These are the devices, these are the kind of innovations, creativity. It is due to the enhancement of technologies into physics. ठीक है? तो physics का बहुत ही importance है to develop the technologies. Okay, so my dear kids, first point I have explained you. For the second point, I am going to explain you. ठीक है? Now during the study of heat and thermodynamics, you know what, my dear kids, heat and thermodynamics, if you decode these two terms, heat is nothing but it is a form of energy. Then what about thermodynamics, sir? The energy when it flows from one system to another system, and you are studying about that branch. मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्चों. हीट एनर्जी इस सिस्टम में है, and you want to just send this heat energy from one system to another system. एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में क्या करना चाहते हो? You want to send that. आप सेंड करना चाहते हो. So when you are sending, okay, so the study about the whole branch, ये one system से दूसरे system को heat energy कैसे travel करती है. So the study, इस study को क्या बोलते हैं हम लोग? Thermodynamics बोलते हैं. And the energy, a type of energy residing into one and second system is called as heat energy. क्या मेरी बात clearly समझ में आ रही है बच्चों? Yeah. So this is called as heat. Yeah, simple. So now what type of applications can be done, sir? अगर हम लोग ये heat and thermodynamics पढ़ते हैं
So where we can see practically in our day-to-day life, sir. So you can see these things into petrol engines, okay, diesel engines, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हो. How will we are having this, sir? हमको कैसे ये हीट एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स कैसे पता चल रहा है? You know, my dear kids, whenever the fuel is burnt into these engines, fuel जब burn होता है ना, उससे जो produce होता है, that will be heat. तो heat जो है ना, it will be used as a energy. So from one system to another system, from one part to another part, to run the whole system. एक सिंगल सिस्टम रहता है ना जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स. तो एक सिस्टम में हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करके फ्यूल से, तो दूसरे पार्ट को भेजने के बाद होल सिस्टम रन करने स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली. ठीक है. सो ड्यू टू दैट यू विल गेट मोशन इनटू द व्हीकल्स. तो पेट्रोल इंजन है, तो अगर कोई बाइक है उसमें पेट्रोल इंजन यूज कर रहे हैं हम लोग, कोई कार है उसमें पेट्रोल इंजन यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग फ्यूल, by using petrol as a fuel. ठीक है. And if you are using diesel engine into the cars, so you are using fuel as a dual diesel to get what, to get the amount of heat to run that vehicle. Yeah, even though CNG, very good Parisian, CNG है ना, ये क्या है? CNG means what? Tell me first, long form. What do you mean by CNG? ये गैस तो है, सबको पता है. CNG का लॉन्ग फॉर्म क्या है? Compressed natural gas. Okay, very good. So this type of gas will be used in CNG engines. ठीक है. ये कहां पे यूज होता है? Is it used in the autos? Tell me, is it used in the autos? Auto rickshaw? Yeah. Even though in the cars also, है ना? Okay. So my dear kids, listen up. तो ये सारे चीजें हैं. Why we are using these things? Either petrol, diesel, CNG, simply to produce the heat energy to run any type of vehicle automatically. है ना? अपने आप तो नहीं दौड़ेगा, जब फ्यूल दोगे तभी ऑटोमेटिकली दौड़ते हैं. ओके. ओके. सो लिसन अप माय डियर किड्स, ये सारा चीज हो गया. नाउ आफ्टर दिस वी आर यूजिंग स्टीम इंजन्स, है ना? ये भी हमने यूज किया है. वी ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस फेज. स्टीम इंजन्स का कहां पे यूज किया है बताओ मुझे. कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स अ वेरी क्या कहते हैं इसको, जहरीला पदार्थ है ये, हम इसको यूज नहीं कर सकते. परिजन. ट्रेन्स, वेरी गुड. सो स्टीम इंजन्स, अर्ली देयर वाज यूसेज ऑफ कोल्स. कोल को यूज किया जाता था. तो कोल को यूज करके टू प्रोड्यूस द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट. तो उसी हीट से जो मतलब स्टीम निकलता है, मतलब पानी को उबाला जाता था तो उससे जो स्टीम निकलता था, तो विद दैट हॉट स्टीम द इंजन विल बी गेट रन ऑफ द ट्रेन. ठीक है. इन केस ऑफ स्टीम इंजन्स, nowadays we are using in the trains diesel engine, वरना बैटरी से भी इंजन्स मतलब इंजन्स चल रहे हैं. इवन दो विद द मैगलेव कंसेप्ट. मैगलेव कितने लोग जानते हैं ये कंसेप्ट बताओ मुझे. आई थिंक नॉट डब्ल्यू, इट इज वी, इट इज. Tell me, how many of you know this maglev? You are going to levitate the magnet. मैग्नेट को लेविटेट करना मतलब फ्लोट करना, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. इफ यू सी द कंसेप्ट ऑफ बुलेट ट्रेन्स, okay, bullet trains, some bullet trains are running on the electricity basis, and some bullet trains which are running on the maglev concept, that train is called as maglev train, and it is run only in the Japan like country. Once you search into the YouTube, you will come to know कि यार ये क्या होता है पता है. You will be having two parallel tracks. यहाँ पे ऐसे parallel tracks होंगे. ठीक है. And चलो यार थोड़ा ढंग से डाल लेते हैं इसको, आपको थोड़ा पता चलेगा क्लियरली. सो दिस इज रेलवे ट्रैक. ठीक है. इस पे ट्रेन चलने वाली है. नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू, यू नो, सिंपली दे आर गोइंग टू पुट द मैग्नेट लाइक दिस. ये मैग्नेट्स है समझो. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वुडन
वुडन प्लैंक्स, दे यूज्ड टू पुट मैग्नेट्स हियर, है ना. सो ये मैग्नेट्स क्या करता है सर, व्हाट इट विल बी गोइंग टू डू सर, ऐसा क्या होगा. सो वन एंड इज magnified with the north pole, but it will be apparent, it will be not permanent. नॉर्थ साउथ बनाएंगे, देन साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ. सो फॉर 1 सेकेंड ये ऐसा रहेगा पैटर्न. फॉर नेक्स्ट सेकेंड यहां पे क्या होगा पता है, नॉर्थ की जगह साउथ आएगा, देन अगेन नॉर्थ. मींस ये करने से क्या होगा सर, द सेम ट्रैक वॉट एवर, सेम पैटर्न वॉट एवर इट इज ऑन द ट्रैक, ऐसा ही जो एक सिस्टम है ना, इट विल बी फिक्स्ड टू द यू नो बॉटम ऑफ द ट्रेन. ट्रेन के नीचे भी ऐसा ही एक सिस्टम लगा रहेगा, ठीक है. समझो ये वाला है, इट विल बी दिस वन, ये वाला है समझो, ठीक है. यहाँ पे ये ट्रेन के नीचे फिक्स किया गया है, ओके. एस एन एन एस, ओके, एस एन एन एस, एस एन एंड एन एस. से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहां पे है और दूसरा यहां पे, आई हैव केप्ट इट लाइक दिस, एक के ऊपर एक रख दिया मैंने. नाउ you all know that if s comes on n, both will get attracted, मतलब attract करेगा. Say for example for first second I am going to change, s से मैं इसको n बना दूंगा, इसको n से s बना दूंगा, मतलब there will be force of what, force of repulsion, है ना. तो फॉर फर्स्ट सेकंड में ये कॉम्बिनेशन एस एन था, मैंने एन एस बना दिया, ठीक है. फिर मतलब ये वाला n था, s बना दूंगा और इसको n बना दूंगा. फिर ये वाला s था, इसको s बना दूंगा. देन अगेन s n n s s n. फॉर फर्स्ट सेकंड में मैंने रिवर्स कर दिया. देन अगेन फॉर नेक्स्ट सेकंड मैं फिर इसको चेंज करूंगा. अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन. इससे क्या होगा, इससे एक मोमेंटम मिलेगा ट्रेन को. if I make it in a very speed mode, not in 1 second, in terms of microseconds में अगर मैं ये vary करता हूँ, so then this train will be going to get maximum speed, and that speed will be somewhere around 580 kilometer per hour. Are you getting my point, my dear kids? So this train is very much faster than even bullet train. तो इसका नाम है maglev. And this train will not be going to touch the tracks. It will be going to float, ऐसे हवा में ही उड़ता चला जाएगा. And the grip will be somewhat like this, ऐसे grip रहेगा. I will show you here. The grip generated by train, मतलब ऐसा रहेगा. Wait, this is the track of the train. ये track रहेगा ऐसे, and train का grip रहेगा ना, वो ऐसे रहेगा. Are you getting my point, my dear kids? जिससे क्या होगा, it will be floating all the time. क्या मेरी बातें क्लियरली समझ में आई बच्चों regarding maglev train? Yeah. So I will move to the next concept. We were talking about steam engine, है ना. तो steam engine भी हो गया. रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स के बारे में कुछ पता है कैसे वर्क करता है? उससे पहले एयर कंडीशनर्स, एयर कंडीशनर्स के बारे में ज्यादा मैं आपसे बोलूंगा नहीं, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिमूव द हीट. और फैन जो कहते हैं ना, लेस अमाउंट ऑफ हीट वाला जो एनर्जी रहता है, दैट विल बी गोइंग टू गिव मेक अ ब्लो ओवर योर फेस, और इट इज सब्जेक्टेड टुवर्ड्स यू. तो जिससे क्या मिलता है, ठंडी हवा मिलती है ना. तो गर्मी पूरा सोख लेता है इन दिस केस. ओके, सो एयर कंडीशनर में क्या करते हो आप लोग, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिमूव द अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द रूम. कैसे, ये आपका रूम है, इससे आप क्या कर रहे हो, एयर कंडीशन लगाए हुए हो, एंड यू आर रिमूविंग द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द रूम, है ना. तो आप क्या कर रहे हो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिमूव कर रहे हो. तो हीट एनर्जी रिमूव होने के बाद बचता क्या है अंदर,
This portion will be cold portion, है ना? So due to this, air conditioner कैसे काम करता है? Yeah, it will provide you cold portion, cold atmosphere. ठीक है? Same way in the refrigerator case, I will take the example of double door fridge, है ना? तो डबल डोर फ्रिज में एक होता है डीप फ्रीजर, दूसरा वाला नीचे वाला होता है नॉर्मल ठंड रखने वाली चीज. ओके, सो व्हेन यू रिमूव द अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम दिस पोर्शन, यहां से आप हीट को रिमूव करते हो, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली क्या होता है बताओ मुझे, टेल मी. व्हेन यू आर रिमूविंग द अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम हियर with the green color, I'm going to show that from the second cabin. ये समझो ये पहला वाला कैबिन है, ये दूसरा वाला है, ठीक है, फ्रिज में. तो द सेकेंड कैबिन, यहां से जो हीट है इट विल गो एंटर इनटू द वेयर, फर्स्ट वाले कैबिन में हीट एनर्जी एंटर करती है व्हेन यू आर रिमूविंग आउटसाइड हीट एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट कैबिन. तो यहां पे जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन रिमेन्स कंप्लीटली कोल्ड, है ना? तो कितना यहां से हीट एनर्जी जो यहां पे मिल रही है, फिर से यहां पे क्या करोगे आप, यू आर रिमूविंग द हीट एनर्जी. सो यहां पे कोल्ड रहने के बाद क्या होता है, यहाँ पीछे जो मशीन होती है दैट विल गेटिंग हीटेड. तो ये जो हीट बन रहा है ना, तो ये हीटेड जो एनर्जी रहती है, हीट एनर्जी, इट इज एंटरिंग इनटू दिस डिफ्रीजर. फिर से यहाँ पे क्या करते हो, यहां से हीट एनर्जी रिमूव करने के लिए फिर से यहां से हीट एनर्जी को रिमूव करना स्टार्ट करते हो, बिकॉज दिस हीट एनर्जी इज गेटिंग इनसाइड हियर, एंड यहां से फिर से आप रिमूव कर रहे हो. सो अगेन यू आर मेकिंग द सेकंड पोर्शन वेरी मच कोल्ड. सो दैट इज व्हाई ये जो डीप फ्रीजर का पोर्शन होता है ना, इट विल बी ऑलवेज क्लोज्ड, ओपन नहीं रहता है. इफ इट इज ओपन, द कोल्ड एनर्जी, नॉट कोल्ड एनर्जी, द लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फ्रिज, है ना? इधर उधर तितर बितर हो जाता है. Yeah, that's what that outside full heat, no, Parijan, since this is not a isolated system, particular complete isolated system नहीं रहता है, it is a closed system रहता है, ठीक है? तो complete isolation कुछ ही portions पे होते हैं फ्रिज के, है ना? तो जो हीट एनर्जी कहीं से भी एंटर कर रही है ना, तो उसको फिर से नीचे उसको ये किया पुश किया जाता है, फ्रॉम देयर अगेन इट इज मतलब एमिटिंग ऑफ हीट एनर्जी निकाला जाता है, ठीक है? रिमूविंग ऑफ द हीट एनर्जी कैन बी डन फ्रॉम द फर्स्ट कैबिन. तो फिर से हीट एनर्जी ऊपर की है, नीचे जाके कोल्ड. सो यही मींस दिस विल बी द प्रोसेस विद द रेफ्रिजरेटर्स, सेम केस विद द एयर कंडीशनर्स. सो इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? क्या मैंने जो बोला आपको क्लियरली समझ में आया? एंड डू यू फाइंड सेटिस्फैक्टरी, या और इस पे एक्सप्लेनेशन करना है? द थर्ड पॉइंट आई एम गोइंग टू मेक इट ऑन, या आई एम गोइंग टू मेक इट ऑन लॉज ऑफ hydrodynamics. Okay, so what is this? We are using physics for technology इस केस में. Yeah, so in case of hydrodynamics, you know, we used to have this concept. ये वाला जो concept है ना, हम कहाँ पे use करते हैं पता है? We are going to use it in the vehicles as well as aircrafts, है ना? Sir, first of all, tell us what is hydrodynamics. Yeah, water in motion. Listen up, my dear kids. Hydrodynamics is the branch of physics that deals with the systematic study, that deals with the systematic study of water or fluid thrust, water or fluid thrust over over
over subjected aerodynamic structures. Okay, मेरी बात सुनो बच्चों. What do you mean by aerodynamic structures? Tell me first of all. Aerodynamic structures क्या होता है? What is aerodynamic structures? What is aerodynamic structures? ये क्या होता है? Tell me quick say. If you know that. If you don't know, you can say, sir, we don't know, sir. Aerodynamic structures क्या होता है? Aerodynamic structures are the structures which is, these are the structures which are used to enhance the bodies to have movement flawlessly in air medium or against weight. Listen up, my dear kids. The design of the cars, क्या डिस्क शेप बनाया हुआ देखा है? एंड परपेंडिकुलर टू दिस यहाँ पे नीचे टायर्स लगे हुए हैं एंड द फेस इज सिंपली फेसिंग द एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये कार क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा. सो whenever you are choosing the moving objects, whenever you are choosing the moving objects, so you need to apply the application of aerodynamic structures over that. So to simply overcome the air resistance blow, है ना, एयर रेजिस्टेंस का जो ब्लो रहता है उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? आपको स्ट्रक्चर शार्प बनाने पड़ते हैं. शार्प बनाने से क्या होता है? सो दिस विल कट द एयर रेजिस्टेंस वेरी नाइस वे, इन अ वेरी नाइस वे. ऐसे एयर आके यहाँ पे हिट कर रहा है और सीधा ऊपर जा रहा है ना. So you are avoiding the air resistance blow simply by doing what? Simply by doing the objects or simply by applicating the object, the aerodynamic idea over the objects, moving objects. ठीक है ना? So this moving objects may be on the road or it may be in the air medium, in the sky. ठीक है, तो आप हेलीकॉप्टर्स ले सकते हो. तो हेलीकॉप्टर्स का देखो आप, हेलीकॉप्टर्स इज ऑल्सो नॉट इन द शेप ऑफ डिस्क, ऐसा नहीं रहता है. सो हेलीकॉप्टर्स ऐसे मूव कर रहे हैं, so definitely it will be going to fall. So helicopter square shape में नहीं रहता है. Why? Simply to avoid the air resistance. तो helicopter कैसे होता है? It will be just like a sharp knife की तरह. ठीक है, ऐसे, है ना. It will be like, the structure will be like this. ठीक है ना, ये आपके rotars है ना, and this is the stands, or else tires भी रहते हैं. So when air blow is hitting at the nose of the helicopter, so the air blow will pass like this from the above of the its head. तो यहाँ पे ये जो tail है ना, तो यहाँ पे भी एक रोटर लगा रहता है. So simply to give the balance to the helicopter, तो हेलीकॉप्टर ऐसे घूमे ना वो, है ना, तो उसको बैलेंस देने के लिए ऐसा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर टू द, ये वाला हॉरिजॉन्टल ब्लेड ऐसा अगर घूम रहा है तो ये वर्टिकल कैसा घूमेगा? मींस इफ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ये आपका ऐसे घूमेगा. मींस दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं 90 डिग्री पे, सिंपली टू प्रोवाइड द बैलेंस टू द हेलीकॉप्टर. ठीक है, तो ये तो हो गया. क्या कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर दैट टर्म because I studied that in third sem of aeronautical engineering. I made aeronautical engineering till fifth sem in Pune. I don't remember that term. I don't remember. Anyhow, छोड़ो उसको. So this is how. ठीक है,
either with the car or helicopters, even with the planes का भी ऐसा ही होता है, aerodynamic structures, है ना. And extra fins have been provided simply to give the stability, because without these wings, uh, these are very much unstable aircrafts. तो stability देने के लिए ये wings fins जरूरी है. Okay, so unstable कैसे कहते हो सर? क्या unstability जरूरी है with the aircrafts? In the combat aircrafts it is necessary, my dear kids, क्योंकि combat aircrafts में जो delta wing होते हैं ना, उसके fins नहीं होते हैं. Delta wings, it will be like this. Presently this type of aircraft we can see into the IAF. Tejas है आपका, Mirage 2000 है, and the recent one I don't remember, it's Rafale. This is also delta wing. So 3 of the aircrafts are delta wing. ठीक है. ये क्या होता है, नॉर्मल कहते हैं ना, विंग एयरक्राफ्ट्स कहते हैं इसको. It will be carrying fin with that. ठीक है. For this type of things fin नहीं रहता है यहाँ पे, सिर्फ टेल वाला fin ऊपर वाला रहता है. ठीक है. Okay, so this is all about aerodynamics structures. So what we were discussing, what was the purpose of discussing physics for technology? ये सारे तकनीक है ना, physics के हैं. So it has provided to the, means those ideas have been provided stability and enhancement of the aerodynamics, enhancement of the flying ways इन एयरक्राफ्ट्स. मतलब जो एयरक्राफ्ट है या एरोडायनामिक स्ट्रक्चर है उसमें एनहांसमेंट बढ़ाने के लिए ये सारे तकनीक किए गए हैं. एंड इन हिंदी हम इसको जुगाड़ कहते हैं. इन साइंस इट विल बी कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी. इन हिंदी वी यूज्ड टू कॉल इट एज जुगाड़. किसी भी तरह से स्थिरता लाना किसी भी चीज में. ठीक है. एनीहाउ, सो हाइड्रोडायनामिक्स, स्टिल हाइड्रोडायनामिक्स क्या है सर? आपने एयरक्राफ्ट के बारे में बोला, यू सेड अबाउट कार्स सर. नाउ व्हाई these concepts you are connecting with the hydrodynamics? तो हाइड्रोडायनामिक्स का इसमें क्या पार्ट है सर? Why we are using that particular branch to study all these things? See my dear kids, whenever you make creative things, say for example कोई भी चीज आप बनाते हो, जैसे कि बचपन में गणपति मिट्टी लेके बनाते हो, टूटते रहता है वो. ठीक है. when you keep it on the table or somewhere else, वो टूट जाता है. क्यों टूटता है? and you used to have the question, यार मैंने बनाया टूटा और जो आगे वाले बंदे ने बनाया वो नहीं टूटा. because they are using the technology of plaster of Paris, है ना. plaster of Paris ये वाला टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इस वजह से टूट नहीं रहा है. सो लोकल वाला जुगाड़ टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करते हैं? दे यूज टू हैव जेडी मन्नू, है ना. local peoples, those who are making without using the plaster of Paris wala technology, JD ಮಣ್ಣು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು, ಸಿಂಪಲ್ ಲೋಕಲ್ ವಿದೌಟ್ ಕಲರ್, ಬಾಳ ಕಲರ್ ಇರ್ಲಾರ್ದ ಗಣಪತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ when it comes to the hydrodynamics, ये क्या है एक्चुअली? you used to take the water thrust, आप पानी का thrust लेते हो. ठीक है. पानी का thrust लेके रेडी करते हो पानी का thrust, and you are going to apply it on the what? car. आप किस पे यूज करते हो? the company which has made ready a new car. ठीक है. सर इस पे क्यों यूज करना है सर? because when it is traveling on the road, if the vehicle is moving with the 140 kilometer per hour, तब क्या होता है? the car is facing what? car is facing wind blow. ठीक है ना. so this wind blow maybe इस कार का स्ट्रक्चर, एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर उतना सही नहीं है. हो सकता है कि इस विंड ब्लो से ये कार 140 किलोमीटर पर आवर पे आने के बाद इट में रोल डाउन एंड फॉल फ्रॉम द रोड, उतने स्पीड पे हो सकता है. सो टू टेस्ट दैट, कोई भी चीज रोड पे उतारने के लिए प्रैक्टिकली, मतलब उसका जो ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? यू नीड टू टेस्ट इट इनटू द लैबोरेटरी.
ठीक है ना। सो व्हाई, तो सिंपली ट्रायल करना पड़ता है, ट्रायल करने के बाद ही उसका वेरिफिकेशन निकलता है, एंड फाइनली जो आईओसी होता है, एफओसी होता है। एफओसी कब मिलता है? जब इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलता है। इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस विल गेट इनटू द लैबोरेटरी, है ना। सब कंपनीज के रिसर्च लैबोरेटरीज रहते हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग कंपनीज बट आल्सो ऑफ रिसर्च सेंटर्स, है ना। तो फॉर द एयरक्राफ्ट आल्सो यू आर यूजिंग दिस हाइड्रोडायनामिक्स, क्योंकि पानी का जो ब्लो होता है ना, इट इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन द विंड। तो पानी का ब्लो लेके कार पे हो या अपने एरोप्लेन्स पे हो, हिट करवाया जाता है। विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, उसको एरोडायनामिकली फिट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंटेन किया जाता है, जिससे क्या होता है, दीज हाइड्रोडायनामिक ब्लो और थ्रस्ट, whatever we are providing, whatever we are subjecting over our target, तो ये जब it will it will satisfy the conditions कि यार 200 किलोमीटर पर आवर तक भी जाने के बाद भी ये कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन है समझ लो, फॉर द कार और फॉर द एयरक्राफ्ट, say for example 2200 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द कंडीशन फॉर पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। हमको इस कंडीशन पे बनाना है, दिस इज अवर मार्क, जिसको कहते हैं, से फॉर एग्जांपल कोई एयरक्राफ्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी यूज्ड टू कॉल इट एज, क्या बोलते हैं, ओके, प्रोटोटाइप कहते हैं, प्रोटोटाइप। by using this prototype we used to fulfill our objectives कि मेरा वाला एयरक्राफ्ट 2200 किलोमीटर पर आवर तक रीच करे स्पीड, by using one engine और twin engine, ओके। उसके बाद अगर समझो कि 2250 तक भी ये क्या कर सकता है, द एयर रेजिस्टेंस जनरेटेड बाय द एयर ब्लो, ठीक है, वो थ्रस्ट को क्या कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है। आफ्टर दिस, से फॉर एग्जांपल एट दिस स्पीड, एट दिस स्पीड एयरक्राफ्ट का, सर एयरक्राफ्ट हम रिसर्च लैबोरेटरी में कैसे इतने स्पीड पे दौड़ा सकते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मेक दैट। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को फिट करते हैं किसी जगह पे, या कार को ऐसे स्टैंड लगा के फिट करते हैं इस स्ट्रक्चर को, एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द व्हाट, स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द फ्लूइड, स्पीड ऑफ द विंड ब्लो, एयर ब्लो। तो सारे टेस्ट करने के बाद इसका स्पीड है ना, अगर इसका स्पीड है तो वही इसका स्पीड है, समझ लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So they used to put the different condition. With that, when it will withstand the resistance of the air blow, तब जाके इसको initial operational clearance मिलता है, IOC, initial operational clearance. So we are using the parameters to test the technology कि जो भी मैंने जुगाड़ वाला टेक्नोलॉजी बनाया है, is that correct or not? So the branch where we are going to study the air resistance which is subjected to the aerodynamic structure, और wind resistance और water resistance, है ना, तो वो किस पे सब्जेक्ट किया जाएगा, एरोडायनामिक स्ट्रक्चर पे। तो उसी स्टडी को हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। ओके, सो हाइड्रोडायनामिक्स इज ओवर, वेयर वी स्टडी ऑल अबाउट व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। सो माय डियर किड्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसके बारे में है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, व्हाट आर दीज? ओके, so basically you know my dear kids, electromagnetic waves we used to see day to day life। कहाँ पे देखते हैं? एक्सरेज, वो क्या है? इट इज द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फिट करते हैं। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो उसका रेंज क्या बनता है? सारे जो डिफरेंट यूवी रेडिएशंस, दोज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। So this is the range of electromagnetic waves. Sir, क्या हम visible light का ही example लेके चीजों को समझ सकते हैं? Yes, my dear kids. Infrared rays, those are also the category of electromagnetic waves. Say for example, this is your bulb source from where the light is emitted. तो light यहाँ से emit हो रहा है, ठीक है। So इसमें क्या होता है? This light, when it is get emitted into the space, so इससे क्या बनता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल,
द इलेक्ट्रॉन विच इज हाईली एक्सेलरेटेड, बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड रहता है, उससे क्या स्पिल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पिल होता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, ठीक है। सो दिस साइकिल जनरेट्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सिग्नल्स, है ना। तो कैसे, ऐसे बच्चों, once you see here, this electric signal produces what, perpendicular magnetic signal, ऐसे। तो how you are going to draw this, this is 90 degree. So every time electrical signal is produced, the perpendicular magnetic signal is generated, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक सिग्नल जैसे ही आगे बढ़ता है up to here, and this produces what, due to this magnetic signal, ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है। मींस both electric signal and magnetic signal both will sustain each other and it will move further in the it will emanate in forward direction, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं एक दूसरे को सस्टेन करते हुए, ओके। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसका जो वेवलेंथ का रेंज होता है, दैट रेंज इज 450 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। मतलब ऑर्डर ऑफ द वेव लेंथ, मतलब एक वेव अगर मैंने ऐसे ले लिया, द ऑर्डर इज कितना रहेगा, दिस इज 1 by 10 raised to 9 मीटर। कितना रहेगा, 1 by 10 raised to 9 मीटर, मींस यू कैन राइट एज 10 raised to minus 9 मीटर, ऐसे। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ सिंगल वेव, ये ऑर्डर रहता है। सो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एंड दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो कहां पे यूज होता है सर? ये मैं सेंडर हूं, यहां से आपको भेज रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, साउंड सिग्नल, साउंड सिग्नल विच इज रीचिंग टू द mic of the laptop, through which it is entering into the what particular programming and via hardware किस ऑप्टिकल फाइबर्स में से जा रहा है। सो ऑप्टिकल फाइबर में से कहां पे रीच अप हो रहा है, इट विल गो टू योर डिवाइस, ठीक है। वहां से फिर से साउंड सिग्नल, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल से देन अगेन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू साउंड सिग्नल। तो द थिंग इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है, फ्रॉम वन सिग्नल टू अनदर सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड सिग्नल एंड साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? यस। सो you all came to know that electromagnetic waves, basically it is used to establish the communication between sender and receiver. It is with the help of physics we have discovered this type of electromagnetic wave, invented this type of electromagnetic wave। क्योंकि discovered और invented दोनों इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि discovered इसलिए कह रहा हूं क्योंकि already it is present in the universe in the form of sun rays। इन्वेंट इसलिए कह रहा हूं कि कुछ नए हैं, एक्स रेज लाइक दैट, राइट। रेडियो वेव्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस माय डियर किड्स, दैट्स ट्रू, 100% ट्रू। तो क्या मेरी क्लियरली बात समझ में आई सारी चीजें? ओके, सो फिजिक्स फॉर टेक्नोलॉजी तो ओवर हो गया। सो टुमारो वी आर गोइंग टू यूज फिजिक्स फॉर सोसाइटी, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट है ना, ये वाला पॉइंट, वी आर गोइंग टू मेक फिजिक्स फॉर सोसाइटी। तो कल इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। इज दिस इनफ? इतना एक्सप्लेनेशन काफी है या ये खत्म कर दूं? फिजिक्स फॉर सोसाइटी कंप्लीट कर दूं? शैल आई कंप्लीट इट? आई विल टेक 5 minutes. Okay, I'll do that. The principles and laws of physics are used for constructive purposes. किसके लिए यूज होते हैं ये?
कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज होता है। नाउ सी हियर, अभी मेरा सिटी बीजापुर है, ठीक है। किसी एक बंदे का, समझो मेरा एक फ्रेंड है सचिन, ठीक है। सो ही इज इन शोलापुर। नाउ समझो कि इस बंदे का कुछ एक्सीडेंट हो गया, मान के चलो इस बंदे का एक्सीडेंट हो गया है और ज्यादा कुछ नहीं लगा है। ही इज इन हॉस्पिटल, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड, नाउ ही इज ओके, बट ही इज रिमेम्बरिंग मी, मुझे याद कर रहा है बंदा, तो मुझे बुला रहा है फोन करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज यूजिंग फोन, फोन से इसने कम्युनिकेशन को इजी कर दिया। एंड अनदर वन, वी कैन यूज एरोप्लेन्स टू रीच लॉन्गर डिस्टेंसेस। यार शोलापुर तक तो 100 किलोमीटर है, छोटा डिस्टेंस नहीं है, चल के जा सकते हैं। सो इफ आई यूज एरोप्लेन, मैंने एरोप्लेन को यूज किया मान के चलो, ठीक है। सो यहां से लेके शोलापुर तक रीच करने के लिए आई विल रीच देयर विद इन हाफ और 1 आवर, है ना। सो यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इट हैज हेल्प्ड मी, सो फॉर सोसाइटी इट इज वेरी मच हेल्पफुल, है ना। सो द another thing, now say for example, nowadays it is easy, we peoples are using smartphone, है ना। हम स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें इजी हैं। वी कैन सिंपली रिकॉर्ड द मोमेंट्स, है ना। अभी मैं फोन से अगर आपको कोई चीज दिखा रहा हूं और आप खुद देख रहे हो, यू आर रिकॉर्डिंग दैट, या so GPS is one of the communication, my dear kid. What I'm saying, I'm going to capture the moment, मैं moment को capture करना चाहता हूं, and I want to see that moment into the same color at that particular moment में जो कलर है ना, उसी कलर में मैं उस मोमेंट को देखना चाहता हूँ। सो क्या आज तो क्या है, स्मार्टफोन्स हैं, बट अर्ली टाइम्स where the science was revolutionizing in the 19th century, तो तब क्या था, स्मार्टफोन नहीं था, उस वक्त तो स्मार्टफोन नहीं था, बट बाय यूजिंग द वीडियो रिकॉर्डिंग्स और उसको एक टेक्नोलॉजी से डेवलप करके we were using the color television, okay। मैंने वो भी दौर देखा है, we were having the black and white television, ठीक है। BW टीवी करके बोलते थे उसको, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है। we were seeing the महाभारत, everything's like white black इतना ही कलर दिखता था, but when we purchased the color television we used to see every scene of the महाभारत into कलरफुल रिप्रेजेंटेशन, उसका डिपिक्शन था ना कंप्लीटली कलरफुल था। मतलब अगर ऊपर जो क्राउन है, इफ इट इज गोल्ड कलर, इट इज गोल्ड कलर, है ना। एंड कुछ कपड़े हैं या कोई ट्री है वो ग्रीन है तो वो ग्रीन ही है। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? सो बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ फिजिक्स there is they made enhancement in technology and they use that technology for the society, तो कलर टेलीविजन यूज हुआ। And the third thing, we used to have electricity, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, ठीक है। so this electricity is used to use electrical appliances, जैसे कि समझो in the olden days समझो कोई फंक्शन है, some marriage is there and you want to make a small छोटा छोटा कहते हैं ना ग्रेवी लाइक थिंग फॉर पर्टिकुलर मसालास और पर्टिकुलर पेस्ट्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था पता है? 2 बड़े पत्थर होते थे, एक दूसरे के ऊपर पैच कर दिया जस्ट लाइक अ डिस्क शेप और उसको ऐसे घुमाया, ओके। एंड दैट विल बी वेरी मच हेक्टिक वर्क, ओके। but by using the electricity into the electrical appliances like mixer, है ना, mixer grinder जिसको कहते हो आप लोग, so this mixer grinder helped us a lot to make a mixie of pastes and masalas, okay। तो छोटे से टाइम में within 2 minutes 3 minutes 5 minutes, पहले कैसे सुबह से लेके शाम तक आपके जो पूर्वज है ना, मम्मी के जो मम्मी है या दादी के जो मम्मी है,
they were finding very much difficulty to mash the things. छोटा छोटा पाउडर करने के लिए बहुत डिफिकल्टी, सुबह से लेकर शाम तक काम ही करना पड़ता था। आप लोग तो टेलीविजन के सामने बैठते हो तो सीरियल जब तक खत्म नहीं होता तब तक नहीं उठते हो, सारा काम खत्म होने के बाद यू यूज टू मेक द छोटा छोटा थिंग्स आराम से, वो भी 2 मिनट्स में 3 मिनट्स में, ठीक है। या एंड ऑल्सो से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक चीज कहता हूं, 1000 करोड़ इंटू 32 कितना होता है, हम थिंक करते हैं, बट बाय यूजिंग द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, बाय यूजिंग द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का जो ये डिफिकल्टी है, वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स है ना, बाय यूजिंग बाइनरी ऑपरेशन आइडियाज, है ना। बाइनरी ऑपरेशंस के जो नंबर होते हैं ना, उसका जो आइडियाज यूज करके हम क्या करते हैं कंप्यूटर्स में। सो द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इनटू द कंप्यूटर्स सिंपली टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस। ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज करते हो, कंप्यूटर्स यूज करते हो, है ना। एंड ऑल्सो मुझे आपको बात करना है, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, सो आई एम हियर sitting at my home and you peoples are sitting at your home. So simply to establish the communication we are using satellites, है ना, satellites, antennas. So these are the gifts of physics by using technology to the society, ठीक है। तो फिजिक्स फॉर सोसाइटी आपको क्लियरली आपको पता चल गया बच्चों। Okay, shall I close this class my dear kids? Thank you. आज थोड़ा जुबान लड़खड़ा रही है मेरी, बिकॉज आई एम हैविंग फास्ट, उपवास है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बोलने में। Anyhow, take care my dear kids. I'm going to upload this video on my channel, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा। आपका जो कहते हैं ना डाटा भी बहुत ज्यादा नहीं जाएगा इफ आई अपलोड इट ऑन द यूट्यूब। सो अगर मैं डायरेक्टली वीडियो भेज दूंगा तो उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इट टेक्स मोर डाटा, फाइन। तो आपको जब कभी भी डिफिकल्टी हो, यू कैन विजिट टू these videos, fine, at my YouTube channel, fine, thank you. So those who have not subscribed, wait, those who have